Hello, students. Once again, you are most welcome here. This is the last part of your chapter, A Triumph of Surgery, from your second book, The Footprints Without Feet. As in the last video, you have read about the condition of the dog Tricky, that the mistress of the dog was extremely worried to take out the condition of Tricky's health, and now Tricky was at the hospital, and the mistress sent their many healthy diets like that eggs, wines, and many oils and things, sweets to maintain his health. But the doctor and the doctor's staff knew very well that all these things are harmful for the dog, as once again he will be uh, in extra weight. So they didn't feed all these things to the dog. Now let's see from here. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. Here constitutions means the physical construction, जो उसकी बॉडी का निर्माण से तात्पर्य था. He, the doctor and his staff couldn't believe, but now they were believing about the rich mistress Mrs. Pumphrey when she also started to send the costly brandy for the dog Tricky for the physical formation of his body. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drank, and therefore the few nights were very uh, well night for the doctor and his staff, and they were enjoying and drinking respectfully the spirit and wine provided by the dog's mistress. They were days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with brandy. Now, this was the moment, a very satisfactory moment. The days were also spending very satisfactory for the hospital staff as they start their day, their morning time with the egg, and improve their afternoon time with the wine, and they finish their luxurious day with a fire of brandy. So the time was very interesting for them. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. Temptation means with the attraction, and this time this was a very attractive moment for the hospital staff. They wanted to have Tricky as a permanent guest there. But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. But they could not have the dog as a permanent guest at the surgery, as the doctor knew very well about the thinking of Mrs. Pumphrey, that she was suffering so much after a fortnight, and she will try to compel the doctor to know about the recovery of her dog, and she will be very curious too, and very curiously she was waiting for Tricky to once again have it as a collection in her house. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Away
कुछ मिनट के अंदर ही ये सारी बात वहाँ लोग विचार कर ही रहे थे कि कुछ मिनट के अंदर ही एक 30 फीट की लंबी चमचमाती हुई ब्लैक मेटल मिस ब्लैक कार सर्जरी मिस हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। द चॉफर ओपन द डोर, चॉफर मतलब यहाँ ड्राइवर से है, उसने डोर को खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर एंड एट दैट टाइम द डॉक्टर मिस्टर हैरियट नोटिस द appearance of Mrs. Pumphrey as she had lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her और नोटिस किया कि at that time she was binding her hand very tightly. Her lips were also trembling and in a trembling way she said, "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" कहा कि मिस्टर हैरियट, मुझे ट्रुथ सच्चाई बताइए, इज ही रियली बेटर, क्या मेरा डॉग वास्तव में ठीक है या नहीं। यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो डॉक्टर ने कहा हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं बैठे रहिए, मैं भी उसे आपके पास ला रहा हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dog was hurting round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. And now the doctor moved towards the house into the garden. There he found that Tricky was playing among the pack of the dogs. There he was also running very rapidly to flap its ears and to wave its tails, and it was the little golden figure of the tricky. In 2 weeks he had been transformed into a lithe hard muscled animal, और पिछले 2 सप्ताह में ही वो काफ़ी एक फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल्ड एनिमल के रूप में कन्वर्ट हो चुका था, ट्रांसफॉर्म हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और कुत्तों के झुंड के साथ वो अच्छी तरह से दौड़ भाग भी रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, बॉडी को भी पूरा अपना स्ट्रेच कर रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, अब उसके चेस्ट जो है ग्राउंड को ब्रश भी अब करने लगे थे, अर्थात जो पूरी चेस्ट उसकी बॉडी जो थी बिल्कुल ग्राउंड पे टच हो जाती थी, और वो चीज़ नहीं था, बस हल्का फुल्का ब्रश कर रहा था उसकी बॉडी, अर्थात अब काफ़ी सुधार हो गया था। उसकी जो फ्लैश लटके हुए थे बॉडी, वो सब अब हार्ड मसल के रूप में कन्वर्ट हो चुके थे। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, और जैसे ही कह रहे हैं कि मैंने उसे पैसेज से होते हुए, गलियारा से होते हुए लेकर मैं घर से बाहर आया, देखा कि चौफर जो है, ड्राइवर जो है, अभी भी कार के दरवाजे को पकड़े हुए खड़ा है। और व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई हार्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप, तो बिल्कुल ही एक ट्रेमेंडस मिस ह्यूज लीप, एक लंबी सी छलांग लगाते हुए जो डॉग था, लंबी सी छलांग लगाते हुए इनके हाथों में से उछल करके सेल्ड इन टू माई मिसेस पम्फ्रीज लैप, मिसेस पम्फ्री के गोद में जा कर के बैठ गया। उनसे 14-15 डेज बाद भी जैसे वो डॉग मिसेस पम्फ्री को देखा, उनको पहचान गया और उछलते कूदते उनकी गोद में जाके बैठ गया, और इट मीन्स he was very happy to see its mistress. He recognized her very well. She gave a startled means surprise, वो चकित हो गई। Oh, and then had to defend herself, और फिर वो खुद को डिफेंड करने लगे। As he swarmed over her, जैसा कि ट्रिकी उनकी बॉडी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया।
लिकिंग हर फेस, उनकी फेस को चाटना शुरू कर दिया, एंड बार्किंग, और फिर भौंकना भी शुरू कर दिया। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and balls, none of which had been used. एक्साइटमेंट का मोमेंट था। वो चौफर जो था, ड्राइवर जो था, वो अपने ट्रिकी के सारे सामान को हॉस्पिटल से बाहर लाना शुरू कर दिया। मिस्टर हैरियट ने भी उसकी मदद किया सारे सामान को बाहर निकलवाने में, ट्रिकी के साथ ले जाने के लिए। लेकिन जितने भी सामान ट्रिकी के लिए मिसेस पम्फ्री ने भिजवाया था, उसमें से कोई भी सामान यूज नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, और फिर जैसे ही कार वहाँ से चली, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पम्फ्री जो है विंडो से झुककर बाहर देखी। टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। एट दैट टाइम द टीयर्स वर rolling down from her eyes, and her lips were also trembling at that time in excitement. And she said, "Oh, Mr. Harriet," she cried. She cried in happiness. She represented her pleasant mood at that time and said, "How can I ever thank you? This is a triumph of surgery." Or Mrs. Pumphrey says that, "I'm very grateful to you. I can't pay thanks for your great deeds." And she also added that this is a triumph of surgery. यह आपके सर्जरी की जीत है, आपके अस्पताल की जीत है। ये सारी बातें, ये सारे धन्यवाद मिसेस पम्फ्री ने उस वक्त वहाँ पे ज्ञापित किया। तो स्टूडेंट्स, therefore we have completed this chapter, and I hope you will see this video. Okay, goodbye everyone.